Hello students, so till now we have studied about the pointers, and today we will study about the two operators which are used in pointers. The first one is ampersand and the second one is asterisk. So this ampersand operator is also known as address operator, and the asterisk operator, that is this one, is also known as dereference, dereference, dereference operator. So we will study all the both this operator, address operator and dereference operator. So the address of a variable can be obtained by preceding the name of a variable with an ampersand sign known as address of operator. So in C++ also, when we use to define int x, any variable x, and if we will write ampersand x, that is and x, then what it gives the address of the value x. So let's suppose that with an diagrammatic explanation we can say that this is some variable x, and the address of this, let it 1x100x11. This is the address of this variable x. So ampersand x will give this variable. Okay, so क्या होता है, एम्परसेंड एक्स जो भी एड्रेस होता है उस वेरिएबल का वो हमें डिस्प्ले करके दिखलाता है. सो फॉर एग्जांपल हियर आई हैव गिवन अ एग्जांपल ऑफ फू. दिस इज फर्स्ट any ऑब्जेक्ट, एंड आई एम राइटिंग द एम्परसेंड, दैट इज़ द माई वैर. ये जो माई वैर एक वेरिएबल है, उसके एम्परसेंड को हम लोग फू में स्टोर करते हैं. फू भी एक तरह का मतलब वेरिएबल टाइप वेरिएबल है. So this would assign the address of variable myvar to foo. So by preceding the name of the variable myvar with the address of operator ampersand, we are no longer assigning the content of the variable itself to foo, but its address. तो अगर हम ऐसे लिख सकते थे, this line states that अगर foo equal to myvar, this same as x equal to y. कोई भी एक वैल्यू y का अगर हम सोच लेते हैं कि 10 है, तो अगर x इक्वल टू वाई करें तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, x का वैल्यू 10 हो जाएगा. तो यहाँ पे भी सेम है, फू इक्वल टू माई वैर, तो फू का माई वैर का जो भी वैल्यू है वो FOO फू में आ जाएगा. बट इन दिस एड्रेस ऑपरेटर वट वी आर स्टेटिंग दैट फू इक्वल टू ampersand माई वैर. ampersand माई वैर मीन्स जो भी माई वैर का एड्रेस है वो फू में जाएगा. ओके, so the actual address of a variable in memory cannot be known before runtime, but let's assume, in order to help clarify some concepts, that myvar is placed something around the memory 1776. तो जैसे यहाँ x का वेरिएबल 1x0011 ले लिया, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ये जो myvar है उसका एड्रेस है 1776. तो let's see that what happens when this address operator is called. सो इन दिस केस यहाँ पर हम लोग क्या करें, माई वैर इक्वल टू 25. तो कोई भी एक वेरिएबल ले लिए, उसका वैल्यू इक्वल टू 25 आएगी. सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, FW फू, ये भी एक वेरिएबल है, और उस पर हम लोग क्या करें, उस पर एड्रेस ऑफ माई वैर, मतलब माई वेरिएबल का जो एड्रेस है वो किस पे, फू पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं. एंड थर्ड स्टेटमेंट स्टेट्स दैट ये जो बार नाम का एक वेरिएबल है, उस पर हम लोग क्या करें, माई वैर का वैल्यू कितना है, 25. सो माई वैर का वैल्यू 25 वो हम लोग किस पे डाल रहे हैं, बार पे. ठीक, लेट्स सी विद दिस डायग्राम क्या हो रहा है. सो माई वैर, ये एक माई वैर है 1776 पे, इस वाले पोजीशन पे, और माई वैर पे वैल्यू कितना, 25. ये फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए. दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एम्परसेंड फू में क्या स्टोर करें, एम्परसेंट ऑफ माई वैर. एम्परसेंट ऑफ माई वैर मतलब माई वैर का एड्रेस 1776 है, एंड 1776 को कहाँ पे स्टोर करें, वी आर स्टोरिंग दैट इनटू द फू. तो फू में 1776 स्टोर कर दें. एंड द थर्ड स्टेटमेंट स्टेट्स दैट देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड बार, BAR बार, एंड वी आर इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ माई वैर. तो वैल्यू ऑफ माई वैर इज 25. तो 25 हम लोग कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, बार में. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस operator, that is ampersand operator. So let's move on to the explanation of what we have studied till now.
So first we have assigned the value 25 to myvar, which is a variable whose address is 1776, and the second statement assigns foo the address of myvar. तो वही एक्सप्लेन किएंगे जो फू में myvar का एड्रेस 1776 है उसे स्टोर किया जा रहा है, एंड लास्ट स्टेटमेंट असाइंस द वैल्यू कंटेन इन myvar टू बार. तो यहाँ पे 25 जो वैल्यू था इक्वल टू 25 दैट इज बीइंग असाइंड टू bar, and this is a standard assignment operation as already done many times in earlier chapters, also in C, C++ or any other programming language. So the main difference between the second and third statements is the appearance of the address operator. So the variable that stores the address of another variable, like foo in the previous example, is what in C++ is called a pointer. So this is the main line. तो पॉइंटर क्या होता है, जब एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है. ठीक है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, दैट मीन्स दिस फू. तो ये फू क्या है, दिस फू इज द पॉइंटर, दिस फू इज द पॉइंटर. एंड पॉइंटर्स आर वेरी पावरफुल फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज दैट हैज़ many uses in lower level programming language, and we will see all these types of pointer and all the features of it in the upcoming lectures also. So let's see the second operator, which is dereference operator, or we can say that the star operator. This is also asterisk operator. So as just seen, a variable which stores the address of another pointer is another variable is called pointer, and pointers are said to point to the variable whose address they store. मतलब जिस वेरिएबल का जो एड्रेस वो स्टोर किया हम लोग उसको पॉइंट करवाना होता है. क्या करवाना, वी यूज़ टू पॉइंट दैट वेरिएबल टू दैट लोकेशन और दैट एड्रेस. सो एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ pointer is that they can be used to access the variable they point to directly, and is done by the preceding the pointer name with the dereference operator, that is the asterisk operator, and it itself can be read as value pointed to by, and therefore following with the values of the जो previous example लिए हैं तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे. फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ फू. फू में क्या था, एम्परसेंट myvar, मतलब myvar का एड्रेस को हम लोग फू पे स्टोर कर रहे थे. एंड हेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, फू के आगे एक स्टार लगा रहे हैं और उस पर स्टोर कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल BSZ पे. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So this could be read as BSZ equal to value pointed to by foo. मतलब फू जिस एड्रेस को स्टोर कर रहा है उस पर क्या वैल्यू है वो कौन बतलाएगा हमें, दैट रिप्रेजेंट स्टार फू. मतलब फू पे जो एड्रेस है उसका पॉइंट है, मतलब उस एड्रेस पे क्या पॉइंट किया जा रहा है, दैट इज़ द वी कैन से दैट the value of that the value of any variable that is stored whose address is stored in foo, and the statement would actually assign the value 25. तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग देख सकते हैं ये फू का एड्रेस कितना, फू में क्या था, एड्रेस ऑफ myvar, जो myvar का एड्रेस था 1776 वो हम लोग स्टोर किए थे फू पे यहाँ पे. और फू को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग इन दिस मेमोरी में 25 है. इस एड्रेस पे जो वैल्यू था वो 25 था. और यहाँ पे क्या करें, बैज नाम का एक वेरिएबल बनाया है, एंड बैज इक्वल टू स्टार फू. ये था ना स्टेटमेंट, बैज इक्वल टू BSZ इक्वल टू स्टार फू. तो फू क्या है 1776, मतलब एक एड्रेस है और स्टार लगा दिए तो उस एड्रेस का वैल्यू, मतलब जो एड्रेस है उस एड्रेस का वैल्यू हमें पॉइंट कराना है. तो फू 1776 है. अब हमको देखना 1776 पे कौन सा वेरिएबल है. तो 1776 पे 25 वैल्यू का एक वेरिएबल है. तो बैज में क्या होगा, स्टार फू में 25 प्रिंट होगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियरली डिफ्रेंशिएट दैट फू रेफर्स टू द वैल्यू अपना, वाइल फू स्टार रेफर्स टू 25. एंड देयर इज़ यहाँ पे देखिए बैज इक्वल टू अगर फू करते हैं तो 1776 मतलब फू का जो फू का जो वैल्यू है दैट इज़ 1776 वो प्रिंट करेगा. बट जब सेकंड स्टेटमेंट है बैज इक्वल टू स्टार फू, तो उस वैल्यू पे कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, दैट इज़ बीइंग प्रिंटेड. सो हियर इट विल प्रिंट 25. So that's all for this lecture. We will study more in the upcoming lectures.